This New Zealand test team is sort of now in transition. Trent Bolt गया, Neil Wagner चला गया, Ross Taylor चला गया. There is a fresh look to them, but do you think they are ready for the challenge in India? Why this particular batch of Indian cricket almost looking invincible is because whether they get you with the ball, if they don't get you with the ball, they'll get you with the bat. 17 series wins and 12 साल से इंडिया सीरीज नहीं आ रही है घर पे. It's so nice to see कि हमारी जो इंडियन टीम है, they are not being comfortable about their position. Absolutely. बेचारे सरफराज खान के साथ कैसा हो रहा है अपने बचपन में ना, हाउ मारियो वाज अ धोखा कि खत्म होता था ना तो बोलता था अरे लड़की मिल गई, फिर वो बोलती थी सॉरी मैं तो उसकी नौकरानी हूँ, प्रिंसेस इज इन अनदर टावर. इसके साथ वो हो रहा है, ये दरवाजा तोड़ता है, ओह ये लगता है 11 में घुसने वाला दरवाजा था, बोला यहाँ से आगे से जाके राइट लेना, दूसरा दरवाजा है. I want one of those years from Kohli right now where वो हर सीरीज में 2 डबल सेंचुरी मार रहा है. कोहली भाई कर दो यार, थोड़ा तरस रहा है. संजू सैमसन का ये जो हो रहा है मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्या है, आई थिंक उसका नाम अभी चेंज हो गया है. इट्स समझो सैमसन. तुम समझो कि तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस है, खेलो. वैसा ही केएल राहुल का भी अभी नया नाम है, खेलो राहुल. I don't know why my eyes are set on the BGT, but there's something about this New Zealand series which is a great preview to what India is thinking. बट एक आंख WTC के फाइनल पे है. हेलो एंड वेलकम टू बॉल्स एंड बेल्स, जहां पे आप क्रिकेट को सीरियसली लो पर हमारे ओपिनियंस को बिल्कुल नहीं. अब नया एपिसोड रिकॉर्ड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इंडिया में आ रही है न्यूजीलैंड. एंड जब न्यूजीलैंड इंडिया की टूर करने आ रही है, कोई भी फॉरेन टीम जब आती है तो इंडिया कैसा जाल बिछाती है वो हमें डिस्कस तो करना ही पड़ेगा. और आज मेरे साथ है मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो म्यूजिक के दुनिया में मतलब ऐसी धुन रचते हैं जैसे समझो अश्विन रिदम में बॉलिंग कर रहा है. सो प्लीज वेलकम अर्जुन. Thanks Yash, so happy to be here. पहली बात तो जब मैंने सुना कि इसका नाम बॉल्स एंड बेल्स है, इमीडिएटली मेरे दिमाग में यही बैठा कि यहाँ पे तो मज़ा आने वाला है. एंड जब न्यूजीलैंड यहाँ पे आने वाली है, इंडिया को भी बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज द करंट रन दैट दे आर ऑन, इट्स वर्थ डिस्कसिंग. बट वो बहुत ही जेनरस इंट्रोडक्शन है. अगर अभी जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन मैन ऑफ द सीरीज थे बांग्लादेश टेस्ट में, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. बट थैंक्स मैन, आई एम हैप्पी टू बी हियर. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं देखो इससे पहले जितना भी जानता हूँ, फ्रॉम द पर्सन दैट यू आर एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू क्रिएट, द काइंड ऑफ वर्क यू डू इज ऑल वेरी गुड. लेकिन ये जो तेरे अंदर का क्रिकेट का पैशन है ना, वो तेरा एक अलग ही साइड बाहर लेकर आता है. वेरी पैशनेट. ऑफ कोर्स ये इनफैक्ट बचपन से जब इतना खेला है, आई माइट हैव प्रॉब्ली बोल्ड, इट्स एन एग्जैजरेशन टू पीपल इफ दे आर थिंकिंग अबाउट इट, बट I'm quite sure I bowled well over 1,000 overs in my entire childhood. Regular, इतना खेलता था. Then after a particular time you don't get to play it, but you don't let go of that love. No, वो जो एक प्यार है वो तभी आती है जब गेम की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो then you start loving it because it's easily one of the most complex, beautiful sports. करेक्ट. एंड कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड को जो लगता है वो है स्पिन. एंड वो लोग अब भी एक श्रीलंकन टीम के साथ खेल के आ रहे हैं, वेर श्रीलंकन टीम, लेट्स नॉट अंडरमाइन देम, बिकॉज जयसूर्या ने जब से टेक ओवर किया है, एक दे फाउंड अ न्यू विंड एंड प्रोबेबली देयर ट्रांजिशन पीरियड इज नाउ गेटिंग ओवर एंड देयर स्पिनर्स जस्ट रैन थ्रू न्यूजीलैंड. बट ये भी कहना सही होगा दूसरे तरफ से कि दिस न्यूजीलैंड टेस्ट टीम is sort of now in transition because there are some big names who have just left in the last couple of years. You talk about a Trent Bolt leaving. Trent Bolt गया, Neil Wagner चला गया. Yeah, very important. Tom Latham क्या बोल रहा हूँ, Ross Taylor चला गया, Martin Guptill चला गया. Basically they had a settled lineup for years. And अभी ये सब लोग गए ना तो they are trying to fill some gaps. Some of their younger players who have come here, even a BJ Watling was very consistent for them. So now Rachin Ravinder यहाँ पे आ गए हैं, and you are seeing a new fast bowler pairing up with Tim Southee, and there is a fresh look to them. But do you think they are ready for the challenge in India? See, I think you already hit the nail on the head. ये जो New Zealand squad है, it's safe to say the batch which came after Brendan McCullum has also now graduated. They were finished. Your Ross Taylors and Guptills and everyone. पर ये जो बैच है, it's got people like Mark Chapman, Rachin Ravindra, Devin Conway. Devin Conway is of course a senior player in the squad, but he's still the next batch in many ways. Or I think the results in Sri Lanka were more to do with Sri Lanka playing well than a visiting team coming and stumbling against spin, because New Zealand has typically done decently well in subcontinental conditions as well, compared to a lot of visiting squads जो वहाँ पे उनके होम कंट्री में कंप्लीटली अलग कलर है. यहाँ पे आके न्यूजीलैंड का वो डिफरेंस इज नॉट एज मच, एटलीस्ट इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट तो दिखता है. टेस्ट क्रिकेट इज अ होल अदर बीस्ट, स्पेशली इन इंडिया.
So when you look at it that way, I am very excited because when you're talking about a couple of left-handers who are really good against spin, and on the other side you have Ravichandran Ashwin licking his fingers ready to go, और वो ऐसे घुमा रहे अभी फिलहाल. He is playing right now with how many revs to put on the ball. Absolutely. He's not worrying about, obviously, when you've reached that level, he's playing at that place where the speed of the ball, he's able to change the distance between it pitching out here to here by adding just 0.25x more revs on the ball, so it pitches a little earlier. वहाँ पे खेल रहे. So now when this new look, or rather let's say the transitioning New Zealand squad is coming in, हमें एक चीज़ और हमेशा रिमेंबर करना चाहिए कि मुंबई की पॉपुलेशन जो है, that's about 21.2 million. Close to that, yes. New Zealand's population of the entire country is 5.12 million. Correct. तो उसमें से जो ये next batch of players आ रहे हैं, they're probably people who have really loved and enjoyed the sport, and they're all tremendous athletes. That's why they get through, they transition much faster. So it becomes a test of fire for them, especially touring abroad. तो ये tour भी कोई अलग नहीं होने वाला मेरे हिसाब से. तो श्रीलंका tour definitely puts them in a better position to at least compete better against a juggernaut Indian home 100%. side. I think वो लोगों के लिए मैं बोलूँ तो वो लोग ये सोचकर आना चाहिए कि क्या लर्निंग्स हमने लिया श्रीलंका के टूर से. बिकॉज सी, इवन दो द पिचेस इन इंडिया विल नॉट बी लाइक श्रीलंकन पिचेस जो दूसरे दिन से ही टर्न होने लगेगा, लेकिन स्टिल what happens after the third day or 2.5 days, ठीक है, that has prepared them for what kind of defense they should have or a positive kind of cricket that they need to play. वरना देखो, अगर तुम बैठे रहे ना, तो अश्विन जैसा जन तो ऐसे लोगों के लिए रुका है कि ही विल, वो चक्रव्यूह रचेगा तुम्हारे आजू बाजू, एंड लाइक ही विल बी थिंकिंग लाइक चौथे बॉल तक ये डालूंगा, फिर पांचवा बॉल जो बाहर डालूंगा उसमें मेरे को विकेट मिलेगा. हाँ, exactly. And Ashwin, as we know, 11 Man of the Series awards tied with Muthaiya Muralidharan. If he gets another one, which is not far beyond him, क्योंकि home conditions में he is always the first contender to get a Man of the Series award. तो अगर मिलता है, he'll stand alone on top. And in lesser number of tests, like Muralidharan has played 60 odd, he has played some 35 series. हाँ, series. 35 series. Yeah, 60 series for Muralidharan, 35 series. 35 में से 11 में Man of the Series. Yeah. That is almost what, 33% of the time. That is insane. That is crazy. And ये इसका एक और exciting aspect ये है कि of course we are focusing on Ashwin when we're thinking about the Indian thing. What I'm enjoying right now is यश कि तू और मैं दोनों ऐसे बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं है जीतना. करेक्ट, वी हैव जस्ट अज्यूम, वी आर ऑलरेडी राइटिंग या दिल कम, उन लोग का लर्निंग्स होगा, उन लोग के लिए टेस्ट ऑफ फायर रहेगा, द न्यू बैच कैन बेसिकली ब्लड देमसेल्व्स इनटू द रिगर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. बट इट इज रियल, क्योंकि क्या है, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ एनीवन हु वॉचेस और लव्स द गेम, लुकिंग एट दैट राइट नाउ, touring India is probably the toughest tour for a visiting cricket team. Absolutely. At this point, there is no doubt about it. What, 18 consecutive series wins? How much? 17. 17 series wins and 12 साल से इंडिया सीरीज नहीं आ रही है घर पे, 2012 के बाद. करेक्ट. तो ये एक ऐसी टीम के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि दूसरी बात ये है कि जस्ट टू सेट कॉन्टेक्स्ट, दिस लास्ट टेस्ट मैच दैट वाज प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, ओके, you're talking about a new coach, which I think you guys have discussed on this show very well. If you haven't checked out that episode, please go check out. बहुत ही गंभीर discussion है. और उसके अलावा there is that entire thing. There is the advent of Abhishek Nair, who we should talk about at some point in this. And there is this squad that after losing 2 days to rain, 2.5 days, half the time is gone. You just got 35 overs in, and they have generated a result by hammering Bangladesh to a degree. And Bangladesh should not have been hammered. They are not that, the quality that this Indian team made them look, वो उनकी level वो नहीं है. Bangladesh उससे अच्छी है. And these conditions, they had the firepower for it, but it was the mental approach that just broke them. So New Zealand has seen that. They have also gone through their Sri Lanka tour, and that is the starting point of what is going to be this 3-test series. And absolutely, जो तूने बोला ना कि प्लीज ये मत जज करो कि बांग्लादेश उतनी बुरी है. आई थिंक दे गॉट टेकन अबैक बाय व्हाट एटीट्यूड इंडिया केम विद. जब तक वो पता करते हैं ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हो गया, ठीक है, गेम वाज डन. मतलब चाशनी में डुबा के जा चुका था, आर पार हो गया था. जब तक उनको पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, सब गलत हो चुका था. इट्स लाइक वो एक टॉम एंड जेरी वाला मीम है ना, जब वो टॉम को, वो जो डॉग रहता है स्पाइक, वो टॉम को लिटा के
वो एक लकड़े का पट्टा देखते फाट 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 फाट. द स्पैंकिंग हैड हैपेंड एंड जब तक वो लोग आईने में ऐसा देखते मेरा लाल क्यों है भाई, तेरे साथ हाल हो चुका है, सब हो गया है. सो बांग्लादेश का गलती नहीं है क्योंकि जब तक वो लोग रियलाइज करते ऑलरेडी 250 रन हो गया था एंड देन दे स्टार्टेड पुटिंग 7 फील्डर्स एट द बैक. मतलब तुम क्या करोगे भाई, मतलब तुम टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो, तुम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हो अलग लेवल का. एंड दैट इज वेयर दे लॉस्ट द मैच. बट व्हाट इंडिया शोड इन दैट पोजिशन इज दैट ठीक है हम लोग वो लोग हैं जो लेट्स प्लेड मैच बाय मैच डे बाय डे, दे आर गोइंग विद दैट एटीट्यूड. बट एक आंख इसे स्लाइटली WTC के फाइनल पे है क्योंकि तुमको पता है कि वहां ट्रॉफी जीतने का चांस है, तुमको पता है हमने 2 बार मिस किया है. सो दे वर प्लानिंग इन अ मैनर कि अगर ये गलती से मैच ड्रॉ होता है तो ये तो हमारे हाथ के पॉइंट्स जा रहे हैं ना, बांग्लादेश का नुकसान नहीं होगा पर हमारा होगा. सो देव गॉन फॉर द विन क्योंकि लास्ट में ड्रॉ करना होता तो ड्रॉ कर ही देते अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो. सो नाउ व्हाट दे विल बी प्लानिंग इज न्यूजीलैंड हमारे घर पे आ रही है, ये तीनों मैच जीतो सो दैट यू डोंट लीव अ लॉट टू लक कि दूसरों के रिजल्ट पे डिपेंड करना पड़े फाइनल पहुंचने के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मैच जीता हुआ माना नहीं जा सकता. ये जो बात कही है ना, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि चाशनी वाला जो इमेजरी है बहुत परफेक्ट था क्योंकि चाशनी तो मीठी होती है पर अगर उसके अंदर हाथ डाल दो ना, नथिंग इज प्रॉब्ली हॉटर. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस इंडियन टीम्स अप्रोच वाज बिकॉज बांग्लादेश को पता ही नहीं चला. बट यू हिट द नेल ऑन द हेड सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल. It's so nice to see कि हमारी जो इंडियन टीम है they are not being comfortable about their position. Absolutely. They are not leaving anything to chance. And I think you can say that it's also a result of that World Cup cue the Meroya memes for 2023 World Cup का. वहाँ पे जो रोहित शर्मा के स्क्वाड के साथ हुआ, it's those bunch of boys right now. Correct. Built on the shoulders of the brotherhood of Virat Kohli's boys. It's the same overlap is there, but there's something about the way that Rohit Sharma's boys are approaching something. Because I think Rohit Sharma, Kohli and Dhoni were astute tacticians in their own right as well. Kohli was a fearless lead from the front kind of leader. Rohit Sharma seems, and I've heard this in multiple interviews, he's the kind of guy जो preparation जो होता है in terms of the videos, the strategies, all of that stuff, he is probably the most well-read in terms of going into a game with an opposition. तो ये जो 4th डे पे assault मतलब they should have stopped the battle at some point. इतनी बुरी तरह से बांग्लादेश को पेला गया. वो मैच का जो हाइलाइट्स है वो पॉनअप पे है. Welcome to Balls and Bales. So keeping all of that in mind, what you said is absolutely correct. So India is pretty much controlling, or they're not trying to let luck be a deciding factor for the WTC. And something has to be said about the fact that consistently ever since it's been put down, 3 cycles have happened. This is the 3rd cycle. All 3 times India is very much in the conversation for being in the final, and that one last hurdle is there. And I think that's why I'm connecting it to the 2023 boys, is because those guys, you saw how hard they went for the T20 World Cup also. Anyway, this is a context of all of this stuff where New Zealand is sitting and watching all of this, where this Indian team has hammered Bangladesh and forced a result to take control of the destiny of not leave anything to chance. और पहला टेस्ट हो रहा है notoriously at the most prolific run getting venue in white ball cricket in India. One of the, at least, Chinnaswamy Stadium is known for all that. And incidentally, you'll see there are a lot of New Zealand boys in Bangalore, a lot of New Zealand boys in the CSK squads, all of that stuff which is there. So it's exciting in ways where maybe the white ball pedigree that New Zealand has out here will hold them in good stead at Chinnaswamy in terms of being able to counter these kind of aggressive situations. But सबको पता है वो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है. Arjun, you're being where we have to represent both sides. देख, न्यूजीलैंड एनीवेज आर वन ऑफ द नाइस गाइज इन क्रिकेट. सो ऐसा लगता है कि उनके लिए थोड़ा अच्छा बोले. बट इट्स ओके, I'll take 3-0. वैसे तो फिर हमको be nice, we'll take 3-0. वैसे तो फिर हमको ये भी बोलना चाहिए उनके पास है एक ब्रह्मास्त्र, एजाज पटेल 10 विकेट लेने. अरे when you said Brahmastra, I was thinking they have, okay, anyway, let it be. Because I was just going to say Shiva, but that was not the Brahmastra. But exactly, see, ऐसा नहीं है कि they don't have the weaponry. Like there is a Mitchell Santner, there is Ajaz Patel. Their batting में ना, there are not people who are like making their debut or something. Right. Like there is a Daryl Mitchell, Devon Conway, जो लोग 20 के ऊपर के टेस्ट खेल चुके हैं. And Tom Latham तो obviously around उससे भी ज़्यादा खेल चुका है. टिम साउदी जो 100 से ज़्यादा टेस्ट खेल चुका है. एंड ऑब्वियसली
Kane Williamson is not available for the first test from what we've heard. He has a groin injury, but he will be available for the second and the third test. So New Zealand will try their best to, battle, and eventually it will be said that it is Indian spinners versus, New Zealand batters, how they handle it. But as I had said during the Bangladesh series also and before it, I will say it again, that one factor that you cannot let go is rough pitches, dry conditions. If it doesn't rain, Jasprit Bumrah with a reverse swinging ball is something you cannot practice. तुम नहीं कर सकते उसके लिए प्रैक्टिस. करेक्ट. एक्शन अलग है, उस आदमी का कंट्रोल अलग है, उस आदमी का जील, उस आदमी का वो जो भूख है टू टेक विकेट्स, एंड मतलब बैटर को बनाता हूं ना, चलो ना बनाता हूं ना, वो जो है ना, वो उसके पास इतना है ना दैट विल ऑल्सो बी अ चैलेंज दे हैव टू डील विद, कि एक बार वो पुराने बॉल के साथ, एंड हिज एवरेज एंड इकोनॉमी विद एन ओल्डर बॉल is better, much better than a new ball. मतलब वो क्या आदमी है यार? He's a freak. But to get to Jasprit Bumrah, there was a point that you made right now, right before this, which is it's going to be New Zealand's batsmanship versus India's spin twins. How they negate it. Yeah, but it's interesting if you look at the squad for New Zealand, right? You have some of the players you mentioned: Devon Conway, Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Tom Latham, okay, Mark Chapman. These guys are all terrific players of spin. Absolutely. They're actually regarded as good players of spin. Like amongst the visiting squads from New Zealand, they are probably the spin specialists who are kind of visiting. और लेथम ने तो भर के रन भी मारा था इधर. हाँ. And yeah, if I'm not wrong, he's got a huge century or a double century, if I'm not wrong, in India. So the thing is that why this particular batch of Indian cricket is interesting and almost looking invincible is because हमारे spinners पे निर्भर नहीं है. Spinners are at the top of their game right now. They're killing it because whether they get you with the ball, if they don't get you with the ball, they'll get you with the bat. So that's happening right now. But it's because of this fast bowling unit that we have. And it doesn't matter if you're playing a person like Akashdeep, who's suddenly looking very dangerous. He's looking dangerous. Of course, there's tremendous skill, a lot of hours in domestic cricket. But when you put Jasprit Bumrah into this equation, basically, you always have this LHS and RHS, correct? Whichever side you put Jasprit Bumrah off that equation is not only balanced, it's going to tilt in that favor. Exactly. Immediately not equal to ho jata. No, that's why I said disbalanced. Correct. Disbalanced. Absolutely. So it's impossible to say anything more about Jasprit Bumrah, where I think that to see an Indian bowler be the person that is making cricket and fast bowling exciting to watch. Correct. How many times you have fast bowlers from India who are making you sit and watch a test match session even in the middle of a busy day? I'm not saying I'm doing that. I work hard. Or at least the directors who are watching this, please don't think so. But if it's India playing test cricket, you have to watch Jasprit Bumrah bowl. I think everyone will agree. And sirf Indian fans nahi yaar. Yeah, everywhere, worldwide. People around the world are, handling the time difference, waking up to see his spells. मतलब ये ऐसा वाला craze Indian fast bowling unit ने जो अभी create किया है last few, because not just him, even a Mohammad Shami, even when Ishant Sharma was at his peak, and now even Siraj has started to enter the talks. They are bowling with their heart, And yes, exactly, there is strategy behind what they are doing. ऐसा नहीं है कि मैं आके सिर्फ fast डाल के चला जाऊंगा. वो लोग बना रहे हैं batters को. Jasprit Bumrah, I think it's impossible to imagine a scenario where you have probably the current GOAT of Indian cricket, Mr. Absolutely. Virat Kohli, which I know, Yash, down. Relax. I know you're a huge fan. I've been watching the show and I know that you absolutely love him. I love him as well. Because we have been so blessed to have these kind of batsmen come again. And who thought we'll look at Tendulkar and think, koi aur aayega? Nahin, we're still in love with, we have the gods of batting still on our side. And then comes a fast bowler who is probably the most invincible cricketing component in the world right now. No one can look at Jasprit Bumrah and not pick him in their squad. Correct. And the thing is, it's multi-format. And he gets more, because in test cricket, he's getting more overs to outthink you. And on the other side, when Jasprit Bumrah is not outthinking you, वहाँ पे दूसरी तरफ कौन है? As Hardik Pandya would call it, Ravichandran Ashwin is there on the other side. So Ravi Ashwin, oh my God, and Ravi Ashwin
is killing it not only on YouTube, but he's bowling these like it's so amazing to have watched him bowl. And I think he's going to enjoy the Bangalore wicket as well. Even if it doesn't turn, we got to understand that the last test which was there in Bangladesh, there was nothing in the wicket. Correct. What is making this bowling lineup very interesting is that if you give them the most placid conditions, let's assume that they play on the same wicket that Pakistan recently played against in Multan against England in, I think England would not have crossed 350, 400 with this bowling lineup that we have on that placid wicket. Yeah, but it's amazing to see this bowling lineup. As a cricket fan, what more can you ask for? No, I think our bowling attack for years now, because I wouldn't say it's just now, for 5 or 6 years now, they've learned to play chess within cricket. It's Without Yuzi Chahal, that yeah, exactly. Who's a fantastic chess player. But abhi, ye jo mind games, like even when he's not bowling, Ashwin is trying to think about new ways. Like मेरा chance आएगा तो मैं क्या डालूंगा, किसको किधर बनाना है. These guys are also sitting on the strategy meetings, videos देख रहे. Even a Bumrah, even a Shami, they are setting batters up, and we cannot be happier. So मुझे ऐसा लगता है कि India, there are no two ways about it, that India is going to try to finish this off clinically as a 3-0. They don't want any experiments. They want to go to Australia without any pressure, and in that situation where probably they need to win one match after that to secure without anybody else's results depending. There are tough results which we know that they are going to go in our favor, but क्यों दूसरे पे depend करने का? We want to qualify on our own. So वो logic से I just feel like New Zealand can play their best cricket and it's fantastic, but this is not an Indian team who sits on their accolades and becomes complacent. ये लोगों का पेट नहीं भरता है, ठीक है? तो ये लोग वापस उसी भूख के साथ आएंगे. Also the competition in the spots, like right now we've spoken so much about the bowlers. Imagine अश्विन और जडेजा को तो अब स्पिनर्स बुला भी नहीं सकते हैं, उनको ऑलराउंडर्स ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बोथ फिनोमिनल ऑलराउंडर्स एंड they've done it many times, okay? And जहां के इंडिया का लोअर ऑर्डर इतने रन्स बना रहा है लास्ट 5-6 साल में, ऑन दी अदर साइड जो हमारे अगेंस्ट टेल एंडर्स बहुत रन्स बनाते थे वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ अ बुमराह, क्योंकि वो आता है वो टेल को टाक 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 क्लीन कर देता है. सो इज बिकम अ स्पेशलिस्ट. सो उसके वजह से वो जो 100 रन का गैप इंडिया क्रिएट कर देती है ना दोनों टीम्स में, वो कवर ही नहीं कर पाते लोग. और इसके ऊपर से 2 स्पिनर्स और स्क्वाड में बैठे हैं, एंड अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव हु नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, हु विल वॉक इनटू एनी वर्ल्ड लेवल, एनी लेवल. जब उनको मौका मिला है उन्होंने फोड़ा है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है. तो ये हो गया हमारा बॉलिंग वाला साइड. इवन अ शमी जिसकी बात चल रही है कि ही माइट बी फिट फॉर द सेकंड एंड द थर्ड टेस्ट, बट I think they are trying to get him to play a little bit of domestic cricket. Before that, yes. He'll play one game. They're going to assess his match fitness and he's going to come in. But it's expected that he'll play the third test, which is I think the Mumbai test. Yeah. Is where he'll probably play. And उसको ओवरवर्क करने का जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज अ प्रूवन क्वांटिटी. ठीक है, तो तुम उसको फालतू में ना रिगरस ट्रेनिंग करा के मत लाओ, उसको लाओ, उसका वो जो रिस्ट है ना वही गोल्डन है यार. ये जो bowling lineup की बात की है आपने, I think the one standout feature of this bowling lineup is that when you had bowlers like McGrath and Vaughan, and I bring them up because they are known to be, if you were to look at a skill parameter of control, they had the ball on a string. Correct. If they want to pitch it, if this is the wicket and they want to pitch it at this one small pixel, because you're watching it on screen, on that pixel, the ball will land there at the speed they wanted to land at the seam position they wanted to land at, and for Vaughan, the revolutions he wants it to land at. I feel like that parameter has never been higher for a combined bowling lineup like it is for this current Indian bowling. And we've had tremendous bowlers before. We've had the great Anil Kumble, Javagal Srinath, all of these guys. But Zach, oh my God, Zach. Sorry, Zach. Yes. But all of that comes into play, and Siraj is growing in control every day. Shami and Bumrah have probably mastered the level of control that they have more than anybody else. And then you have young kids like Akashdeep. I think Arshdeep Singh hasn't entered the conversation, also fast bowling. But we will be a lot poorer as a bowling nation when you have Ashwin, Bumrah and Shami go out. सिराज के बारे में जो तूने बोला ना, उस पर सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा, जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज बैटर्स गेट सो मच लाइमलाइट. Imagine a Virat Kohli in 2009-10 when he entered the Indian dressing room. उसके जैसे यंगस्टर के लिए
it was a privilege to share a dressing room with a Sachin Tendulkar and a Rahul Dravid, who were already the stalwarts of the game. So एक sponge के तरह उनसे जो भी सीख सकता है ना सीख ले. जब तक वो लोग है, like get inspired and learn. See where you're going I'm with honestly saying for a person like a Siraj, Jasprit Bumrah, Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja and Mohammad Shami are those people. this. Yeah, it's like a Fab Four right there. Like Yeah. तू उनके साथ you're rubbing shoulders with them. You get one of them standing on mid-off or mid-on and talking to you. क्या लग रहा है ये डाल सकता है क्या? Let's set him up in this over and get him. He's jamming with them, yaar. Yeah. So that is actually a parallel of having like a Sachin Tendulkar and Rahul Dravid ka bowling parallel. Yeah. And so for him, what a growing phase this is, and no wonder he's showing progress every day. Yeah, and I think it's just amazing because he's obviously somebody who's so passionate about the game. It's very evident in the way he plays also and his entire background and all of that. Siraj is definitely India के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मोहम्मद सिराज जैसा खिलाड़ी हमारे साथ है. There's no question about that. पर दूसरी तरफ ये भी देख रहा हूँ कि all 3 wickets which are there this time, I feel like it's going to be a very healthy contest. I think you're right. It is going to be a 3-0. That's a very sensible prediction to make. Unless बारिश हो, क्या पागल जैसा बारिश हो नहीं, रहा पर है अभी 2 दिन बारिश से? भी हो गया तो 2 दिन में खत्म करने वाली. So 2-3 दिन में खत्म. That strategy is also there now in place. But New Zealand is not. With all due respect to Bangladesh and Bangladesh cricket, New Zealand is a little bit more going to definitely put up more of a They'll fight. hold their own. Yeah, they will definitely hold their own. But I think it's going to be an interesting series because the context is not just this series. You also have to look at where all of these players are in their respective careers in many ways. I feel like we are talking about, this is the cycle, 23-25 is a cycle where you're going to have the Kohli, Rohit generation hand over the baton in many ways. Correct. So that's a great way for us to get, we've spoken about the bowlers, but I think in terms of batting, I really want to kick off by just saying from an Indian cricket standpoint and a fan standpoint, I want one of those years from Kohli right now where वो हर सीरीज में 2 double century मार रहा है. कोहली भाई कर दो यार, बस अभी थोड़ा तरस रहा है. And I like तू और मैं इतने ardent cricket fans हैं, इससे ज्यादा हम क्या बोले कि इंडिया की बॉलिंग किस लेवल पे है कि सोच इंडिया का टेस्ट सीरीज है एट होम और हम इतने देर बॉलिंग का बात कर रहे थे और अब जाके विराट कोहली का बात हुआ है. सो आई थिंक एब्सोल्युटली अग्री विद यू. विराट कोहली would do himself a lot of good क्योंकि last test में he looked good with Bangladesh because he spent time at the crease, the shots were coming, but एक वो daddy 100 या double 100 चाहिए because you know that puts him in a very good frame of mind before going to BGT to probably his favorite country outside of India. Then he's Australian for a bit. Australian for a bit जहाँ पे उसका वो मुंह पे ये सब होने वाला है, crowd के साथ मस्ती चिल्लाना. But I think except for Virat Kohli, the other person who I want कि वो एक लंबा innings खेले is Rohit Sharma because I think as much as I love Rohit Sharma and everybody is going mad about selfless attitude और first ball sixes एकदम in first test ball cricket, six and वो तो चल requirement था ये innings में. But what I am realizing is that Rohit Sharma ने वो template है ना वो इतना strong कर दिया उसके brain में that he is going too hard in tests also. In tests he's probably one of the batters who is so naturally accustomed to scoring daddy hundreds. We need that from him. Like ठीक है तू अच्छे क्लिप पे स्टार्ट किया, तूने समझ 70 बॉल 50 मार दिया, ठीक है. इफ यू टेक सम टाइम नथिंग इज गोइंग टू हैपन. यू कैन स्टिल प्ले पॉजिटिव क्रिकेट बट आई डोंट वांट यू टू थ्रो योर विकेट आफ्टर स्कोरिंग अ 50. मेरे को चाहिए कि वो बड़ा 100 मारे. क्यों मालूम है? आई ऑल्सो फील दिस टीम दैट वी हैव, it's a correct blend of youngsters and experience. Yeah. Like क्योंकि तेरा गिल और जायसवाल भी है, तेरा एक ट्रांजिशनल जिसको यंग भी नहीं बोल सकते और एक्सपीरियंस भी नहीं बोल सकते लाइक केएल राहुल भी है, ऋषभ पंत का पूरा वो गंगो एटीट्यूड भी है, ठीक है. एंड देन यू हैव अ आफ्टरलाइफ ऋषभ पंत, आफ्टरलाइफ ऋषभ पंत, एंड देन देयर इज अ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हु आर होल्डिंग देम टुगेदर. बोथ ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज टुगेदर, इन सब में एक कॉमन चीज क्या मालूम है? कोई भी शॉर्ट बॉल से डरता नहीं और अनकंफर्टेबल नहीं. करेक्ट. सो व्हेन दे गो टू ऑस्ट्रेलिया विद रन्स इन देयर किटी ना, ये लोग सब लोग इतना पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे ना वहां पे. एंड हु बेटर टू टेस्ट योर सेल्फ अगेंस्ट लाइक देन न्यूजीलैंड बॉलर्स. न्यूजीलैंड बॉलर्स विल टेस्ट यू विद दो शॉर्ट बॉल्स. वो होगा एक स्पेल, स्क्वायर लेग लगाएंगे, फाइन लेग लगाएंगे और शॉर्ट बॉलिंग करेंगे. तो तुम लंबा इनिंग्स खेलो भाई.
मेरे को रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल का पर्सनली आई नीड बिग हंड्रेड्स एंड बिग इनिंग्स फ्रॉम देम बिकॉज अ जायसवाल इज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग बिग नॉक्स. A Gill has come back to form and he's found his own at number 3. Which is great. अपना It's the बना first दिया. series we got to see this new order that India is going to follow. ये एक बात जो तूने कही है ना रोहित शर्मा के बारे में, the interesting feature is if you look back at his entire test career, especially let's count the test career of Rohit Sharma the last 4 or 5 years. 4 or 5 years, yes. There's the non-captaincy part, there's the captaincy part, which is there. I think every time Rohit Sharma has gone on to make 100, he has always scored at a quick rate. Correct. It's always been a quick 100. I remember that when England was here 3-4 years back, the Chennai test where only he scored 100 in the first innings, if I'm not wrong. बाकी सब लोग out हो गए थे and Rohit Sharma just kept sweeping and tough pitch, huh? Yeah, tough pitch, aggressive, quick 100. I feel like with Rohit Sharma and Test cricket, especially the captain version of Rohit Sharma right now, I really think he has. It's very difficult to see an international sports person do this, but he has thrown the entire statistic of I need to score 100 out of his head. And his entire objective is I'm going to take it session by session and I'm going to try and dominate the opposition. We've heard that great Matthew Hayden quote about Dravid, right? Look at aggression, you want to see it, you look into Dravid's eyes. Correct. I feel like because we're in the middle of it, we're not understanding it. And I feel like this test cycle, when it's done, we might look at Rohit Sharma's innings a little differently. I think he's trying to do something. It's something new which he's trying to achieve where you bat the way you're batting in all 3 formats. I think he's trying to bring something else to the table. I feel like you might see a bit more strategic defensive batting from him because he knows how to blunt the new ball, obviously. Because if you remember 4 years back, Rohit Sharma was doing the entire I will play 25 balls, blood, tuck, 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 इंग्लैंड के सीरीज में क्या फिर मारना शुरू कर देता. हाँ. When we went to England, वो लीव करते गया, blunted the new ball. मेरे को बस ये लग रहा है कि तू जो बोल रहा है कंप्लीटली अग्री, बट उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा. आगे मैं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से भी सोच रहा हूँ. आगे जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तू एज अ बॉलर कब रोहित शर्मा को देख के ज्यादा डर रहा है? जब वो 40 बॉल 50 मार के आउट हो चुका है या फिर जब वो नॉन स्ट्राइक में अभी भी खड़ा है? You're obviously thinking about Rohit Sharma if he's at the crease. If he's at the crease, because you know he can explode any time and take the game away from you. ठीक है, पहले के 1 घंटे में ना अगर वो पागल हो गया, वो 4-5 छगड़े मारेगा, 2-3 बाउंड्रीज मारेगा, and suddenly you scored 120 runs in a session. And this is a man he's made double centuries in white ball cricket for fun. So this is just the second he gets the conditions. I would be the happiest if Rohit Sharma scores some big hundreds. I also want to see this one test inning where, the good old days where Tendulkar and Dravid would score this 400-run partnership or Ganguly and Sehwag would score this 300-run partnership. इन दोनों ने कभी बहुत टाइम हो गया टेस्ट मैच में करे वो एक चाय के साथ जब बैठ के शाम को देख रहे हो, हाइलाइट्स देख रहे हो और यू आर वाचिंग द गेम एट दैट टाइम, जस्ट लाइक हाँ कूल, ऑलराइट बॉयज, कैरी ऑन. एंड वो रोहित शर्मा कोहली मोमेंट्स भी होंगे क्योंकि वो लोग अगर बात करेंगे वो स्टंप कैंप में भी आएगा, अरे उसका इधर से वो हो रहा है. सो दैट विल आल्सो कम आउट एंड आई थिंक I've never seen them enjoy each other's company more than they have because they're settled. They know what's coming and they're just focused on the future of Indian cricket, which, like you said right now, we have, oh my God, Yashasvi Jaiswal, kya kahani hai uski, and Shubman Gill has a lot to prove, of course. But you also have the likes of, I think they're also trying to blood Ruturaj Gaikwad, getting into play the Irani Trophy. You have those guys, you have some of the T20 boys, like I think Nitish Kumar Reddy, I'm not sure if he's an all-format player or not. That's all for later. But it's amazing that the future, Yashasvi Jaiswal कल का लड़का है जो टीम में आया है, and in our heads we're not thinking of him as कल का लड़का. Gill also, we are back to the BGT coming up next. But that was baby Gill at that time. Correct. But that was two years ago, if I'm not wrong, 2 or 3 years Correct. ago, not very long ago. So Gill is super young, and we all conveniently forget Rishabh Pant is barely halfway through his 20s. कमबैक पे सेंचुरी कौन मारता है भाई? 2 साल के बाद आने के बाद भी सेंचुरी मार दिया उसने. I think this version of Afterlife Rishabh Pant का fan तो सब लोग हैं ही, but there's a philosophical change that this man has undergone and he is going to be the first of his name. He's going to be the first of his kind. उसका शुरू नहीं हुआ है. I feel like we haven't even seen the start of what Rishabh Pant is going to accomplish, especially in Test cricket. So this New Zealand series, especially by the time we get to Mumbai, hoping that the batting lineup is fired, all of this has happened, hoping that someone like a Shami is back to full fitness.
you are looking at blooding the entire 11, right? But we are looking at it from the stadium. अपन देखने जाएंगे ना. हाँ, they वहाँ पे one vlog for this thing, Balls and Bales. We should definitely do one. And I think that series is going to be amazing from the context of what is coming up, because nothing is bigger than the border gasket. I mean, ठीक है, WTC great, India is playing well for the W, but everyone secretly, all Indian fans know this. ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारना बहुत ही अच्छी बात होती है. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू डू दैट. इट्स लाइक दैट. ऑस्ट्रेलिया को हराना अच्छी बात है. करेक्ट. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके ऑस्ट्रेलिया की मारना, ये तो सही नहीं है, पर हमको अच्छा लगता है. ये दूसरा वाला भी, ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पे आए थे उन्होंने हमको एक बार कुछ हराया था ना. हाँ, नहीं हराना था. 2004 उसका बदला जो अभी तक हम लोग ले रहे हैं. बट आई थिंक ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वी स्पोकन अबाउट मोस्ट थिंग्स. एक पॉइंट जो तूने मेंशन किया था, आई वुड वांट कि अपन उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस बात करें, बिकॉज देयर इज प्रोबेबली ओनली वन डिबेटेबल पोजिशन इन दिस 11, वरना 11 सेटल्ड है. ठीक है, स्क्वाड में भी चेंजेस नहीं होगा. ओनली आई थिंक यश दयाल माइट बी रिलीज एंड व्हेन शमी कम्स बैक. अदरवाइज आई थिंक द सेम स्क्वाड विल प्ले जो बांग्लादेश के साथ खेली. एंड आकाशदीप विल गेट अ रन इफ द पिच हैज समथिंग. अदरवाइज अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से पॉइंट टॉस होगा. सो ऑल दैट इज सेटल्ड. बट केएल राहुल इंजरी से वापस आया. इंजरी के पहले उसने अच्छा ही खेला था, सेंचुरी मारी थी, दैट्स व्हाई ही गॉट टू कम बैक. पर उसके पोजीशन के लिए जो दूसरा जन लड़ रहा है, वो रन्स पे रन्स. सरफराज खान पागल हो गया भाई. इफ इट वाज अबाउट knock on the door, they'll open up. He's broken the door. I think he's put the door in the wood chipper. वो क्या कर रहा है भाई? ईरानी ट्रॉफी के फाइनल में डबल सेंचुरी मार दिया उसने. वो डोर तोड़ नहीं रहा है अभी. वो 4 बार डोर तोड़ चुका है. हर बार डोर तोड़ता है, फिर 2 डोर लगाता है, 2 डोर साथ में तोड़ता है, फिर 3 डोर लगाता है, 3 डोर साथ में तोड़ता है. And so that it's loud. He is being very loud about the fact that you cannot ignore. तूने जो एक्सप्लेन किया ना, उससे मेरे को क्या लगा मालूम है, बेचारे सरफराज खान के साथ कैसा हो रहा है अपने बचपन में ना. हाउ मारियो वाज अ धोखा कि खत्म होता था ना तो बोलता था अरे लड़की मिल गई, फिर वो बोलती थी सॉरी मैं तो उसकी नौकरानी हूँ, प्रिंसेस इज इन अनदर टावर. फिर उधर जाने का, अरे सॉरी मैं तो नौकरानी हूँ, प्रिंसेस इज इन अनदर टावर. अरे बार बार लड़कियों को बचा रहे, वो प्रिंसेस ही नहीं है. इसके साथ वो हो रहा है, ये दरवाजा तोड़ता है, ओ ये लगता है 11 में घुसने वाला दरवाजा था, बोला यहां से आगे से जाके राइट लेना, दूसरा दरवाजा है. आई थिंक बचपन से तूने जो बोला, बचपन का एक दूसरा मेमोरी भी है ना, कि कभी कभी जब खेल रहे किसी के साथ एंड यू हिट द बॉल समवेयर, दे बी लाइक तेरे को खेलना है, तू लेके बॉल लेके आ. I feel like that is the same feeling that Sarfaraz Khan is having right now. Because how many double centuries will he score? He's not scoring big hundreds, he's scoring big double hundreds. He's dominating and I feel like the third test is in Mumbai यार. तो वहाँ पे अगर केएल राहुल को थोड़ा सा रेस्ट या रिलैक्सेशन की जरूरत है ऐसा कुछ तो. बट यू नो व्हाट, आई थिंक देयर इज एक मैक्रो जूम आउट करते हैं उससे. वी हैव टू लुक एट, यू ऑलरेडी डिस्कस गौतम गंभीर एट लेंथ. रॉबिन उत्तप्पा had a stellar 3 years at one point where he had done a bunch of work with a certain gentleman. Dinesh Karthik became the new and improved finisher, DK, suddenly Nidahas trophy, all of that stuff. Correct. The change was again brought in by a certain person. And I feel like that same thing is basically happening right now. We're witnessing the start of that with somebody who is earmarked already as somebody who's at the level or pedigree or caliber of a Rohit Sharma, Virat Kohli and the greats that preceded the game, because there is no doubt about the fact that on paper cricket का अगर कोई game बना, obviously अगर कोई cricket 98 cricket 2000 which year are we in? 24 अगर cricket 24 अगर कोई खेल रहा है, KL Rahul's parameters would be in the high 90s, high 80s or early 90s, because that's how good he is, that's how much love everybody who knows the game will have for him. But it's also a case of, too much of a Sanju Samson situation with him. And it's so sad that Sanju Samson has become an example for this particular aspect, because he's also the same category. Uska bhi kuch parameter 90 ke aspas reh sakte. But KL Rahul ke sath, I feel like with the KL Rahuls, the Sanju Samsons, these people who are definitely probably talent ke bhandar hai. They are the most talented cricketers in the world among. Abhishek Nair is somebody that is going to help transform a lot of Indian cricket and take us
very firmly into the already dominant era that this is our era right now, as our good friends at another podcast would call it. It's the millennium, the Indian millennium, or whatever they would call it. It's important to understand that I think Abhishek Nair is going to have a tremendous role to play with a KL Rahul. मोटिवेटर, क्योंकि है ना वो लोगों में से बेस्ट निकालता है, एंड कूडोज टू हिम फॉर दैट. एंड तेरे बात से मेरे को एक ही याद आया कि संजू सैमसन का ये जो हो रहा है मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्या है, आई थिंक उसका नाम अभी चेंज हो गया, इट्स समझो सैमसन. तुम समझो कि तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस है, खेलो. वैसा ही केएल राहुल का भी अभी नया नाम है, खेलो राहुल. नो केएल नहीं, केएल राहुल. मतलब KLPD is what often happens with him, but that shouldn't happen, because क्या है ना, ये दोनों को बाहर से देख के लोग बोल रहे हैं it's only a matter of time he should succeed. But that's been 4 years. The matter of time has been. पीछे के जो लोग हैं ना वो इतना कंसिस्टेंटली. बाय द वे, सरफराज खान के बारे में ना एक और चीज, मतलब आई जस्ट वांट टू से, अपन लोग देख इतना क्रिकेट खेले लेकिन कोई एकदम हायर लेवल्स पे नहीं खेले, पर एक छोटे लेवल पे भी जब तुमको पता नहीं है कि तुमको खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो अनसर्टेनिटी रहता है ना, उसके बाद भी मेंटली स्विच ऑन स्विच ऑफ होके परफॉर्म करना कितना टफ है. मैंने ये महसूस किया स्कूल टीम्स में, कॉलेज में. तेरे को भी कभी अगर ऐसा हुआ है तो uncertainty can mess with you. It happens in everything, not just sport, like anything. Everywhere. You could be putting in 300%, you could be the best in the room, but you're not the one getting the raffle ticket. Yeah. अभी सोच, वो कानपुर में सब्स्टिट्यूट फील्डर बन के आया है, फील्डिंग कर रहा है, वो सब चल रहा है. उसको भी पता नहीं है कि वो ईरानी ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाला है कि नहीं. उसको अगले दिन बोलते हैं कि तेरे को रिलीज कर रहे हैं, तू खेलने जा. He's traveled, he's reached, started playing, and then he scores a 200. Now that 200, if you put it in this perspective, उसका इज्जत और कितना बढ़ गया. सोच, वो आदमी ट्रैवल करके वहां गया, जो स्क्वाड ऑलरेडी खेल रही है, एंटर हुआ, गया, मैं आया, मैंने मारा 100 नहीं 200 फाइनल में. Where do you think Sarfaraz Khan can play if KL Rahul also has to play in the squad? I think that What right number? now can't happen, क्योंकि क्या है ना, हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है ऊपर के 6 में. Because 4 is Kohli right now. एंड पहले के 6 बैटर्स में से कोई बॉलिंग नहीं करता. ये एक नुकसान जो हम लोगों को अभी सालों से हो रहा है ना, वो धीरे धीरे आई होप it gets cured, because If the T20 series was anything to go by, that might, we had what, 4 people could, and 4 people in the top 6 could 9 bowl. bowlers were there basically. Yeah. So I feel right now it is either or. Both of them can't, because क्या हो गया है, ऋषभ पंत is also not just a keeper, he is a batter keeper who contributes. So किसका भी जगह ना हिला नहीं सकते यहाँ से. So everybody is holding their own. KL राहुल को इसीलिए एक रोप मिल रहा है, because this time he's not made a mistake. He was injured, and now It was beautiful to watch him bat, and now he's confident, he's looking like himself. And ऑस्ट्रेलिया में this is all being prepared for ऑस्ट्रेलिया में वो सेकंड न्यू बॉल जनरली ड्यू होता है जब तुम्हारा 5 या 6 नंबर बैटिंग पे आता है. You want KL Rahul there. सोच के जो जन ओपनिंग करता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंडिया के लिए, वो तेरा 5 नंबर पे न्यू बॉल को निगेट कर रहा है. ही कैन ब्लंट देयर अटैक देन, एंड वापस वी कैन पाइल ऑन रन्स. सो देयर इज अ स्ट्रेटजी देयर. 100%. एंड सरफराज खान विल डेफिनेटली ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया. He will definitely get a chance unless something unfortunate, किसी को कुछ फटीग हो गया, रेस्ट का जरूरत है, छोटा मोटा इंजरी हो गया, he'll be there. Which is why I feel like they might give him a go in the 3rd test. I don't know why. My eyes are set on the BGT, but there's something about this New Zealand series which is a great preview to what India is thinking. Correct. More than the result, more than how New Zealand is going to perform, I think it's going to be an evenly contested series. But And WTC ने जो बना दिया है, जो अपन भी अभी बात कर रहे हैं, no match is a dead rubber. Exactly. So हमारे लिए तो हर मैच इंपॉर्टेंट है, we get those points. yeah, otherwise that Bangladesh game, no way India would have gone so aggressive. Nobody would have gone, none of the teams. So it's making it more interesting. And I Exactly. find this Indian team, वो जो तू बोला ना भूखे है, वो this 2023 batch of the World Cup, not crossing the final line in the World Cup, is making this Indian team think very differently. They are not Correct. thinking about reaching the finals. They're thinking about winning finals. They're not thinking about how to do well in one match. You know, they're thinking about 30 matches. Exactly. And this mentality to maintain ना, वो है चैंपियन का एटीट्यूड जो वो लोग ला रहे हैं. दे आर ब्लडिंग यंगस्टर्स while doing this consistently. जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरा कोई अगर फेवरेट डिश, अगर मॉम समझ रात को मटन या कीमा बना रही है, सुबह ही बता दिया है, ठीक है, तो लंच स्किप करूंगा, थोड़ा नमक का पानी पीऊंगा कि और भूख लगे, सो दैट आई कैन हैव दोस 3-4 पाउस एंड मोर राइस एंड मोर मटन एक्स्ट्रा.
ये लोग हर टेस्ट मैच में ऐसा आ रहे हैं यार, जैसे 2 दिन से खाना नहीं खाया। ऑल ऑफ देम हंग्री टू स्कोर रन्स, हंग्री टू टेक विकेट्स, ये एनालॉजी पैक्स। ये एनालॉजी मैंने कभी सोचा नहीं, मैं ये कंपैरिजन कभी सोचा नहीं, सिर्फ बॉल्स और बेल्स पे हो सकता है। बॉल्स और बेल्स में हो सकता है, और बॉल्स और बेल्स में एक और चीज हो सकती है, जो है कि इंडिया न्यूजीलैंड को बुरी तरह पछाड़ सकती है, एंड सकती है नहीं, करेगी। सो वी आर ऑल होपिंग फॉर अ 3-0, बट वी ऑल वांट टू सी इंटरेस्टिंग मैचेस, नो डाउट, एंड इट वाज फन डिस्कसिंग दिस विद अर्जुन। आप लोग भी कमेंट्स में जाके लिखो क्या आपके स्कोर प्रिडिक्शंस है, सीरीज प्रिडिक्शंस है, आपको क्या लगता है कौन 100s मारेगा, डबल 100 होगा कि नहीं, अश्विन वापस मैन ऑफ द सीरीज बनेगा कि नहीं, ये सारी चीजें जस्ट टॉक टू अस एंड लेट्स इंटरैक्ट गाइज। एंड तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग बॉल्स एंड बेल्स। क्या धमाल ब्रो, बट क्या मतलब न्यूजीलैंड को इतना बुरा लगेगा जब वो ये एपिसोड देखेंगे, तो न्यूजीलैंड को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि सॉरी गाइस, लेकिन तुम ऐसा इंडियन टीम के साथ खेलने आ रहे हो कि तुम अच्छे लोग हो और तुम्हारे बारे में अच्छा बोलने पर क्या बोलूं मैं। नहीं सी बट दिस ये अच्छा लोग वाला चीज जो है ना, हाँ, वो लाइफ में मैं भी हमेशा वैसे ही मानता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। बट अभी लाइफ में वो स्टेज भी आ गया कि भाई ठीक है, मेरे को 3-0 चाहिए, यू गाइस बी गुड गाइस। और जिन लोग श्रीलंका के साथ 88 पे आउट हुए, ठीक है, उन लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है दे आर कमिंग टू इंडिया, पर उनके पैजामे में ऑलरेडी नाड़ा नहीं है, मतलब पकड़ के खेल रहे, तो कैच पकड़ने को हाथ ऊपर किया तो पैजामा उतर जाएगा, वैसा सिचुएशन, नाड़ा ही नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल। स्पीचलेस। क्या ये एनालॉजी के बाद क्या बोलेगा कोई भाई, अरे बाप रे। What can you say? I'm just imagining, yeah. Nada. परिंदे